हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वही ऐसे कुछ स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड वही चलेगा। 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन। और कल हम लोग का एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री हो गया था, ठीक है। वो टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अभी बाकी है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बाकी है। तो आज जितना लग रहा है, ठीक है, आज जितना लग रहा है आज शायद कोशिश करूंगा कि दोनों ही खत्म हो जाए। कल बहुत कुछ हुआ था। कल अच्छा क्लास गया था, ठीक है। हाँ, अभी स्टार्ट होगा लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो चलिए। तो आप लोगों का होली होली कैसे जा रहा है, कमेंट में बोलिएगा आप लोग। हाँ, अभी स्टार्ट होगा लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। ये थोड़ा पता नहीं वन नोट का क्या डिस्टर्ब चल रहा है, तो ठीक है, कोई ना, कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों का अगर मेरा वॉइस या फिर ये वीडियो क्वालिटी कुछ भी लेके अगर प्रॉब्लम हुआ ना, तो आप बोल सकते हो कमेंट में कि भाई प्लीज टॉक इन इंग्लिश। और अगर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा हो पाए तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा हो सके मैं वो क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बोला गया है कि द ऑडिटर shall the auditor shall design and perform design and perform audit procedures audit procedures in order to identify in in order to identify litigation and claims litigation and claims involving the entity involving the entity which may give which may give rise to a risk of rise to a risk of material misstatement misstatement including क्या, द ऑडिटर सेल डिजाइन, क्या बोला गया है, द ऑडिटर सेल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स in order to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to risk of material misstatement, including including
inquiry of management, inquiry of management, and where applicable, and where applicable, others within the entity, others within the entity, including in-house legal counsel, in-house legal counsel. Okay. And the second one is, reviewing, reviewing, reviewing minutes of the meeting, minutes of the meeting, reviewing minutes of the meeting of TCWG. TCWG means those charged with governance. आपको मैं already ये shortcut दिखाया हो, तो TCWG means those charged with governance and correspondence between the entity, between the entity and its external legal counsel, and its external legal counsel. Okay. So the auditor shall design and perform audit procedures in order to identify litigation and claims, to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to risk of material, including अभी ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन एंड परफॉर्म करने में क्या क्या होगा? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, where applicable, others within the entity, and in-house legal counsel. Okay. And reviewing the minutes of the meeting. Sorry, reviewing, क्या हो गया? Reviewing the minutes of the meeting of TCWG and correspondence between the entity and its external legal counsel. Okay. Reviewing the minutes of the meeting of the TCWG, मतलब TCWG दो चार्ज गवर्नेंस का जो मीटिंग होगा उसका तो मिनिट्स तो लाइक वो तो रिव्यू करेंगे, उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मतलब पहले तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड इंटरनल लीगल काउंसिल का मतलब क्या है? लीगल काउंसिल मतलब जो लीगल मैटर्स को हैंडल करते, ठीक है, जैसे लॉयर का टीम समझ लीजिए, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोगों का फर्म के अंदर भी इंटरनल लीगल काउंसिल है, हो सकता है, और बाहर अगर किसी को अपॉइंट किए एज एन लॉयर या फिर एडवोकेट कुछ भी, तो क्या होगा, वो हो गया हम लोगों का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ओके। तो एंटिटी और उसके जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उसका भी मिनट्स रिव्यू करना होगा
एंड इंटरनल लीगल का मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना पड़ेगा, एंड इफ एप्लीकेबल अगर ऑडिटर को लगता है तो अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इंटरनल लीगल काउंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड है, और एक पॉइंट है, रिव्यूइंग रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस reviewing the legal expenses account, the लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट की नॉर्मल नॉर्मल एक्सपेंस तो ठीक है, अभी अचानक से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भाई अगर आ गया, सोचिए नॉर्मल पेमेंट कर रहे हो कि हर महीने 10,000 करके, अचानक से एक महीने 1 लाख का पेमेंट हुआ तो क्यों हुआ, या फिर अगर कोई केस बेस्ड पेमेंट है कि एक केस के लिए इतना, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि एंटिटी के ऊपर ये साल में कितने सारे केस चले जिसका पेमेंट गया। ठीक है। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर्स तो हम लोगों को पता है, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट वेयर एप्लीकेबल अदर विद इन द एंटिटी कॉमन इन हाउस लीगल काउंसिल। फिर अच्छा, ये ना मैं बार बार सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये थोड़ा ना इंक्लूडिंग होगा। हम्म, मैं वही थोड़ा इंक्लूडिंग 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 इन हाउस लीगल काउंसिल। ठीक है। एंड रिव्यूइंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजे एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, ये तीनों जो प्रोसीजर है, इसके अलावा भी तो प्रोसीजर हो सकते हैं ना, तो लिखिए, इन एडिशन इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स टू द प्रोसीजर्स आइडेंटिफाइड above identified above other relevant procedures include other relevant procedures include using information obtained obtained through risk assessment procedures, risk assessment procedures
carried out as carried out as part of obtaining and understanding part of obtaining and understanding of the of the entity and its environment to assist the auditor to assist the auditor to become aware of litigation and claims involving the entity involving the entity. Okay, using the other relevant procedures. What can be the other relevant procedures? Other relevant procedures include other relevant procedures include using information obtained through risk assessment procedure. Okay, carried out as part of obtaining an understanding of the entity and its environment to assist the auditor to become aware of litigation and claims involving the entity. Okay, अच्छा सोचिए कि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किए ऑडिटर। अभी ऑडिटर को लगा कि भाई इधर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तब क्या, तब ऑडिटर क्या करेंगे? ये थोड़ा सा दिक्कत है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? ये क्या है, मैं अगर इसको बार बार काटूंगा ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा ना, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, आगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। if the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claim regarding litigation
और क्लेम्स ये क्या करेगा? आपको पता है ना कि मैं रेड पेन से जो भी करूंगा तो वो हेडिंग ही होगा। ये हेडिंग कर देने का पता है अच्छा क्या होता है कि हम लोगों को ना पता होता है कि हम लोग इसके बाद जो लिखेंगे वो किस वजह से होगा, तो हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है। अभी सोचिए कि ऑडिटर को लगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है रिगार्डिंग लिटिगेशन ऑफ क्लेम, तो ऑडिटर क्या करेगा? द ऑडिटर शैल द ऑडिटर शैल in addition in addition to the to the procedures required by other assets by other assets seek direct communication with the entities with the entities with the entities external legal counsel external legal counsel। ठीक है, इसका मतलब क्या? द ऑडिटर सेल इन पहले तो जो अदर एसेस में लिखा गया है कि भाई ये प्रोसीजर परफॉर्म करना, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। मतलब इंटरनल लीगल काउंसिल से तो बात होगा ही, उसके साथ साथ एंटिटी का अगर कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल भी हो उसके साथ भी बात करना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे करें? ऐसा तो नहीं कि भाई फोन उठाए कॉल किए कि हाँ सर, बोल रहे हैं कि इधर थोड़े मुझे लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये लिटिगेशन, आप थोड़ा डिटेल्स दीजिए। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ये तो अनप्रोफेशनल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? द ऑडिटर शैल द ऑडिटर शैल टू शो टू ए लेटर ऑफ इंक्वायरी टू ए लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर ऑफ इंक्वायरी किसके थ्रू करेगा? लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू। रिक्वेस्टिंग 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 जा जा
requesting the entity's external legal counsel, the entity's external legal counsel legal counsel to communicate directly with the auditor, to communicate directly. क्या हुआ? हाँ, ये क्या है भाई? हाँ, ठीक है, फिर से गया। यही एक दिक्कत लगता है मुझे। Communicate directly with the auditor, with the auditor। ठीक है। अच्छा सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैनेजमेंट या फिर जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो मना कर दे, मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए ऑडिटर से, तो उस टाइम क्या करेगा ऑडिटर? इफ इट इज कंसीडर्ड कंसीडर्ड अनलाइकली considered unlikely that the entities external that the entities external legal counsel will respond that the if it is considered unlikely, ठीक है, external legal counsel will respond appropriately appropriately to a to a letter of general inquiry, ठीक है,
जनरल इंक्वायरी, मतलब ऐसे भी तो ये जो लेटर ऑफ इंक्वायरी जो ऑडिटर भेजेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, तो ये तो एक, मतलब अगर कोई बड़ा फर्म हुआ, ठीक है, लॉयर का फर्म हुआ या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो तो ये सब नॉर्मल जनरल इंक्वायरी को तो उतना भाव भी नहीं देगा ना, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे मैटर है अपना ध्यान रखने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए, ठीक है, ध्यान देने के लिए। तो if it is considered unlikely that the entity's external legal counsel, because the external legal, if the external legal counsel is a organization of sufficient cases, which is sufficiently sized company or organization, okay, and they have other matters also, they will they will not obviously give that much attention which the auditor requires to directly communicate with them, okay. So will respond will it is unlikely that the entity's external legal counsel will respond appropriately to a letter of general inquiry. The auditor may the auditor may seek seek अच्छा, ये बहुत बड़ा है, it is an important concept. Seek direct communication, direct communication to a letter of to a letter of specific inquiry, specific inquiry. It is an keyword, specific inquiry, ठीक है। अभी ये जो स्पेसिफिक लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी है, ठीक है, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी है, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, ये है क्या, ये इंक्लूड क्या क्या करता है, ये लेटर में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट डज द लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड। So for this purpose, a letter of specific inquiry, a letter of specific inquiry includes includes क्या क्या इंक्लूड करता है, और दिस a letter of specific inquiry includes क्या क्या करता है, सबसे फर्स्ट लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। भाई लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स तो ऑब्वियसली इंक्लूड करेगा ही, वरना जानेगा कैसे। बी, व्हाट इज सेकंड, इफ अवेलेबल, ठीक है, व्हेन अवेलेबल, व्हेन और इफ दोनों एक ही है, व्हेन अवेलेबल भी बोलो इफ अवेलेबल भी बोलो, व्हेन अवेलेबल मैनेजमेंट असेसमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है, वो लिटिगेशन एंड क्लेम को लेकर, व्हाट आर द मैनेजमेंट असेसमेंट विद दोज लिटिगेशन एंड क्लेम इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड, मतलब एस्टिमेट करके
कितना खर्चा हो सकता है उसका भी। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम of each of the identified litigation and claims of outcome of each of the each of the identified litigation and claims litigation and claims and its and its estimate of the मतलब अगर सोचिए कि हार गए तो भाई कितना पेनल्टी देना पड़ेगा या फिर कितना पेमेंट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर ये मैटर हार गए, if if company loses any litigation, so there can be a possibility that the penalty of such litigation, if the company loses it, it can be so huge which can affect the going concern of the entity na. There can be a possibility that that the amount of litigation is so big which will affect the going concern principle of the entity. Okay, and its estimate of the financial implication, मतलब अगर सोचिए कि ये हार गए तो भाई उसका जो लिटिगेशन का अमाउंट होगा वो तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत बड़ा हो कि भाई उसका जो गोइंग कंसर्न है जो हम लोग सोचते हैं कि वो चलते रहेगा, भाई ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस ही ठप पड़ जाए, इतना बड़ा लिटिगेशन का अमाउंट हो गया अगर हार गए तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। इट्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल implication including cost incurred, including cost incurred। ठीक है, और सी क्या है? एक रिक्वेस्ट भी, a request that the entity's external legal counsel, entity's external legal counsel क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल confirm the reasonableness, confirm the reasonableness, reasonableness of management's assessment of
management assessment and provide the auditor with further information. The auditor with further information if the list is if the list is considered by the is considered to be incomplete to be incomplete or incorrect or incorrect by the entity's external legal counsel by the entity's external legal counsel। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, एक तो है लिस्ट ऑफ लिटिगेशन और क्लेम। ठीक है, फर्स्ट है लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। व्हेन अवेलेबल या फिर इफ अवेलेबल, मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द outcome of each of the individual litigation and claims and its estimated and its estimate of the financial implication including cost incurred including cost incurred okay, and the request and the request that the entity's external legal counsel first of all confirm the reasonableness of the management's assessment and provide the auditor with further information. Provide the auditor with further information if the list is considered to be incomplete or incorrect or incorrect by the entity's external legal counsel। अरे भाई ओके,
ओके, या तो इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट बाय द इंटीरियर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। Okay. Also, there can be cases in certain circumstances, circumstances, the auditor, the auditor may judge it necessary, may judge it necessary to meet with, to meet with the entity's external legal counsel, the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome to the likely outcome to the litigation or claims. Or there can be circumstances where the auditor may judge it necessary to meet with the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome to the litigation or claims. Okay. Okay, I am pausing just for 1 minute. Okay. This may be the this may be the case where where this may be the case where the auditor the auditor determines that the matter is a significant risk, is a significant risk. The second one is the matter is complex in nature. Okay, and there is a disagreement
there is a disagreement disagreement between between management and entities external legal counsel and entities external legal counsel. Okay, there is a disagreement between management and entities external legal counsel. Okay, ordinarily, okay, first of all, what can be the cases when the auditor may determine to meet with the external legal counsel? Okay, there can be the case. It can be single case of that can be the auditor determines that the matter is complex in nature or the matter is a significant risk, or there can be a combination of these cases. Okay, such that the auditor determines the matter is a significant risk and complex, or there is a disagreement between management and entities external legal counsel as the matter is complex, or it is a significant risk. Okay, ordinarily, so what can be the cases? Matter is a significant risk, complex in nature, or there is a disagreement between management and entities external legal counsel. Okay, ordinarily, 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 such meetings, such meetings require require management's permission, management's permission, management's permission, and and are held with a held with a representative of representative representative of management in attendance, management in attendance. Okay, so such meeting requires management permission and are held with a representative of management in attendance. Okay, ओके, मैनेजमेंट परमिशन लगेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट उधर रहना चाहिए, उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए. फर्दर इफ फर्दर इफ
management refuses management refuses मतलब उधर तो दो कंडीशन था ना, एक तो मैनेजमेंट का परमिशन चाहिए और मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव उधर अटेंड करना चाहिए वो मीटिंग को, ठीक है। फर्दर इफ मैनेजमेंट refuses to the permission give the auditor permission give the auditor. Further, if the management refuses to give the auditor permission permission to to communicate or or meet with the entity's external legal counsel, the entity's external legal counsel. और ये दूसरा पॉइंट नहीं है, ये उसी पॉइंट में और है। और द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एक्सटर्नल लीगल काउंसिल refuses refuses to is to respond appropriately appropriately to the letter of inquiry to the letter of inquiry or is prohibited prohibited from from responding and introduce external legal counsel. First, the management refuses to give permission to the auditor to communicate or meet with the external legal counsel, or the entity's external counsel refuses to respond appropriately to the letter of inquiry or is prohibited from responding. Okay, and and the the auditor is is unable to obtain sufficient
sufficient, appropriate, appropriate audit evidence, appropriate audit evidence audit evidence by performing alternative audit procedures, by performing alternative audit procedures. Okay. First of all, if the management refuses, further if the management refuses to give the auditor permission, management refuses to give the auditor permission to communicate or meet with the entity's external legal counsel, okay, or the entity's external legal counsel refuses to respond, okay, refuses to respond or appropriately to the letter of inquiry or is prohibited from responding, obviously by the management, or is or is prohibited from responding, and the auditor is unable to obtain, sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit procedures. The auditor shall, what shall the auditor do? What shall auditor do? The auditor shall the auditor shall modify the opinion, modify the opinion in the auditor's report, in the auditor's report in accordance in accordance with SA 705, with SA 705. Auditor shall modify the opinion. Auditor, what shall do auditor? Management refu- okay, the auditor shall modify the opinion.
So here we complete the topic of litigation and claims. So litigation and claims में क्या क्या पढ़े हम? The auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to risks of material misstatement, including inquiry of management and where applicable others within the entity. Okay, inquiry of management and where applicable others within the entity, including in-house legal counsel, reviewing the minutes of the meeting of TCWG and correspondence between the entity and its external legal counsel, and reviewing the legal expenses as well. Okay. And in addition to the procedure identified above, other relevant procedure क्या है कि using information obtained through the risk assessment procedures carried out as part of the sorry थोड़ा देर रुक जाओ थोड़ा देर हाँ. So using information obtained through risk assessment procedures carried out of the entity and its environment to assist the auditor to become aware of litigation or involving any. If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claim, what shall the auditor do? The auditor shall, in addition to audit procedures required by the other SS, seek direct communication with the entity's legal counsel. Okay, the auditor shall do so The auditor shall do so through letter of inquiry requesting the entity's external legal counsel to communicate directly with the auditor, and if it is considered unlikely that the entity's external legal counsel will respond appropriately to a letter of general inquiry, the auditor may seek direct communication through a letter of specific inquiry. And what does the specific inquiry includes? The specific inquiry includes list of litigation or claims when available, management assessment of the outcome of each of the identified litigation or claims, and its estimate of the financial implication, including cost incurred. A request that the entity's external legal counsel confirm the reasonableness of management assessment and provide the auditor with further information if the list is considered to be incomplete or incorrect by the entity's external legal counsel. There can be circumstances where the auditor may judge it necessary to meet with the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome to the litigation or claims. Okay. And what can be the cases? There can be the cases where the auditor determines the matter is a significant risk, the matter is complex, or there is a disagreement between management and entity's external legal counsel. Okay. Ordinary such meetings requires management permission and held with a representative of management in attendance. मतलब auditor determine that matter is a significant risk, complex or disagreement, ये तो आप समझे. तो एक मैनेजमेंट का परमिशन भी चाहिए, एक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का परमिशन भी चाहिए, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट वो मीटिंग में होना चाहिए. फर्दर इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव द ऑडिटर परमिशन टू कम्युनिकेट, और अगर सोचिए इफ द मैनेज फर्दर फर्दर के पास कॉमा, फर्दर इफ
management refuses to give the auditor permission to communicate or meet with the entity's external legal counsel, or the entity's external legal counsel refuses to respond appropriately to the letter of inquiry, or is prohibited from responding, and the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit procedure, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705. Okay. तो सेगमेंट अभी खत्म हो गया, अभी स्टार्ट होगा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ये इस स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म तो ये स्टैंडर्ड भी खत्म, फिर आपका छुट्टी। हाँ, तो ये है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अभी आपका मेन क्वेश्चन यही होगा कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन है क्या। तो segment information refers to information about different types of products, about different types of products and services and services of an enterprise of an enterprise and its operation in different geographic areas in different geographical areas geographical areas. So what is segment? Segment information refers to the information about different types of products, and services of an enterprise and its operation in different geographical areas. Okay. And how does the auditor obtain sufficient appropriate audit evidence about the segment information? The the auditor shall obtain sufficient appropriate appropriate
audit evidence, evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance in accordance with the applicable FRF. Applicable FRF means applicable financial reporting framework. Applicable FRF by how the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of significant information in accordance with the applicable FRF by by obtaining by obtaining an obtaining an understanding understanding of the of the methods used by management used by management in in determining segment information segment information and obtaining an understanding of the methods used by management in determining segment information. And first of all, delete this and, okay, just for some minute, just for some moment, not minute. हाँ, obtaining an understanding of the methods, an understanding, obtaining an understanding, okay, of the methods used by management in determining segment information, okay, and evaluating evaluating whether such whether such methods are
methods are likely to result in accordance with the applicable FRA in disclosure in accordance with the applicable FRA with the applicable FRA and where appropriate where appropriate testing the application of such method. Testing the application of such methods of such methods of such methods. Okay, and there is a big and performing performing analytical procedures analytical procedures or other or other audit procedures audit procedure appropriate in the circumstances appropriate appropriate in the circumstances performing analytical procedures performing analytical procedures or other audit procedures or other audit procedures appropriate in the circumstances. Okay, performing analytical procedure or, or other audit procedure appropriate in the circumstances and okay and the obtaining an understanding of the methods used by the management in determining segment information and evaluating whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with the applicable FRA and where appropriate testing the application of such methods. Okay.
अच्छा, इधर देखिए, इधर बोला तो गया है कि ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कल में, ये तो समझ में आया। लेकिन ये जो बोला गया है कि ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन, अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैसे? तो इधर एक आप एरो बनाइए। ठीक है, इधर आप एरो बनाइए, पेंसिल से ही बनाना ऑब्वियसली, पेन का दाग मत लेना, और लिखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड, अंडरस्टैंडिंग of the methods used by management used by management in in determining information segment information and whether such methods are methods are likely to result in likely to result in disclosure in accordance with the applicable FRA with the applicable FRA include includes include क्या क्या है? Understanding of the methods used by management in determining segment information and whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with the applicable FRA। क्या क्या include हो सकता है? Sales, transfer, charges between and charges between segments, charges between segments, and and elimination of inter-segment inter segment amount, okay, sales transfer and charges between segments and elimination of intersegment amount. The second one is comparison comparison with budgets with
कट जा भाई, ये एक प्रॉब्लम है। Sales transfer charges between segments and elimination of inter-segment amount and comparison between budget and other expected results. For example, operating profit as a percentage of sales, comparison with budget and other expected results. The allocation of assets and cost among segments, and consistency with prior periods and the adequacy of disclosure with respect to inconsistencies. Oh, 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 oh. Okay, I am pausing for some minute. Okay, कंपैरिजन। ओके, एक बार देख ले। अरे भाई, फिर से कैसे प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा? अभी तो ठीक हुए थे। रुकिए रुकिए। ओके, कंपैरिजन विथ budgets, comparison with budgets and other expected expected results. Okay, such as operating profit as a percentage of sales, as a percentage of sales. The allocation of costs, the allocation of cost, cost allocation of costs, allocation of assets, sorry, allocation of assets, इस बार मत अटकना भाई। Allocation of assets and cost among segments. Allocation of assets and cost among segments. And the fourth one is consistency, consistency with prior periods, prior periods, and the adequacy of the disclosures, and the adequacy of the disclosures, of the disclosures with respect to inconsistencies, with respect to
inconsistency, okay. So understanding the methods used by management in determining segment information, whether such matters are likely to result in disclosure in accordance with the applicable includes sales, transfer, and charges between segments, and elimination of inter-segment amount, okay, comparison with budgets and other expected results, such as operating profit as a percentage of sales, allocation of assets and costs among segments, allocation of assets and costs among segments, and consistency with prior periods. Consistency with prior periods. And the adequacy of the disclosures with respect to inconsistency, and the adequacy of disclosures with respect to inconsistency. Okay. Sales transfer charges between segments and elimination of intersegment amount, comparison with budget and other expected results such as operating profit as a percentage of sales, allocation of assets and costs among segments, and consistency with prior periods, and adequacy of the disclosure in relation to inconsistency. Okay. तो आज हम लोगों का अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आज हम लोगों का लिटिगेशन और क्लेम का पूरा टॉपिक हुआ एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन का पूरा टॉपिक हुआ। तो आज इसे 501 खत्म हुआ और एंड अभी कल स्टार्ट होगा इसे 505। ठीक है, तो बाय। ओ हाँ, अगर आपको ये वीडियो और क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी बोलिएगा। ठीक है, बाय।